was told by me the class ethics and values for plus 3 fourth semester, arts, science and commerce for all universities of Odisha. Odisha प्रत्येक यूनिवर्सिटी ପାଇଁ प्रत्येक विश्वविद्यालय पढ़ुवा प्लस 3 फोर्थ सेमेस्टर पिलांका ପାଇଁ एथिक्स एंड वैल्यूज हम जानी 25 मार्क प्रश्न आसीबो आउ तर पैटर्न होची पिले 10 मार्क 5 मार्क विशिष्ट दुईटा प्रश्न तापरे तमर 1 मार्क विशिष्ट 5टी प्रश्न आउ 2 मार्क विशिष्ट 5टी प्रश्न ए भलिया 25 मार्क प्रश्न प्रत्येक सेमिस्टर रे आसीबो प्रथम सेमिस्टर रो नै कि षष्ठ सेमिस्टर जाए 6टा जाक सेमिस्टर रे हम पढिबा एथिक्स एंड वैल्यूज। तो आज हम स्टार्ट करिबा फर्स्ट सेमिस्टर रो प्रथम अध्याय बा फर्स्ट यूनिट आज पढ़िबा। एज मु कहितली त मान को पिले मु क्लास करिबी। सो एज फॉर माय प्रॉमिस आई हैव स्टार्टेड द क्लास टा स्टार्ट करिबा पिले। तो मु एम्स ऑफ द मॉड्यूल ऊपर को जाउ नै, लेट मी स्टार्ट द क्लास फ्रॉम जेंडर इक्वालिटी एज एन एसेंशियल प्रिकर्सर टू सोशल प्रोग्रेस। अर्थनैतिक उन्नति समाज रे आनिबा पई, अर्थनैतिक प्रोग्रेस आनिबा पई जेंडर इक्वालिटीटा बा लिंगगत समानताटा कहीं जरूरी से विषय आज हम पाठ पढ़ा ये प्रथम क्लास रे। दे लिंगगत समानता बा जेंडर इक्वालिटी जहाँ कहूँ जो थे माने गर्ल्स एंड बॉयज शुड बी गिवेन इक्वल इम्पोर्टेंस। तो कहीं दिज्व इक्वल इम्पोर्टेंस यार भूमिका कौन आमर माने अर्थनैतिक मानदंड को सबल करने यार माने फल आमर अर्थनैतिक उन्नति बा अवनति साधित किभली होउची से विषय पढ़िबा आज। सो सोशल प्रोग्रेस इज अचीव्ड व्हेन ए सोसाइटी मीट्स द बेसिक ह्यूमन नीड्स ऑफ इट्स सिटीजन। सोशल प्रोग्रेस कहले कौन पिले इकोनॉमिक अर्थनैतिक प्रगति जहाँ कहूँ, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट जहाँ कहूँ। सोशल प्रोग्रेस इज अचीव्ड व्हेन केतेबेले व्हेन ए सोसाइटी मीट्स जेतेबेले सोसाइटी पाखरे पहुँचे, सोसाइटी पाखरे समाज पाखरे थाए द बेसिक ह्यूमन नीड्स ऑफ इट्स सिटीजन। सोसाइटी रा समाज रा समस्त नागरिक मानकर जो प्राथमिक आवश्यकता बेसिक नीड्स प्राथमिक आवश्यकता जेतेबेले नागरिक मानक पाखरे थाए, नागरिक माने अनुभव करती सेतेबेले समाज रे प्रगति साधन ही थाए, समाजर प्रगति साधित ही थाए। सो allows the member to enhance and sustain the quality of their lives and by this it allows the members to enhance and sustain the quality of their lives। सेमानंकर जीवनर गुणवत्तार विकास ही थाए, सेमानकर समाज रे सेमानकर गुणवत्ता सामाजिक गुणवत्ता जो क्वालिटी आम जहाँ कहे सोशल क्वालिटी से क्वालिटी सस्टेन होकर रहे स्थायी होकर रहे एंड क्रिएट्स द कंडीशन फॉर ऑल इंडिविजुअल्स एंड इट क्रिएट्स यह सृष्टि करे व्हाट द इंडिविजुअल्स टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। पोटेंशियल कहले कौन पिले पोटेंशियल कहले मनुष्य भितर थिबा कौन जो आम कहे गुणवत्ता आम भितर जो गुण सब अच्छी भल गुण सब अच्छी से पोटेंशियल अच्छे आम पाखे नहीं तो क्वालिटी जहाँ अच्छी से पोटेंशियल सब कौन फुल पोटेंशियल मनुष्य निजे बुझी पारे तार पोटेंशियल कौन। देन बट नो सोसाइटी किंतु कौन सी समाज नो सोसाइटी कैन डेवलप विदाउट इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ वुमेन। मन रखा देयर इज नो सच सोसाइटी इफ द कंडीशन ऑफ वुमेन इज नॉट गुड। जदि जेकोसी समाज रे स्त्री मानकर स्थिति ठीक नहीं, इफ द कंडीशन ऑफ वुमेन इन ए सोसाइटी इज नॉट गुड वी कैन से दैट सोसाइटी इज डेवलप्ड। से समाजटा प्रगति करिछि बोली आमे कहि परिबा नहीं, वी कैन से। एंड एविडेंसेस कहले प्रमाण, एविडेंसेस शो दैट प्रमाण सिद्ध यह प्रमाण सिद्ध जे सोसाइटीज विथ ग्रेटर जेंडर इक्वालिटी जो समाज रे जेंडर इक्वालिटी जिते अधिक थाए सोसाइटीज विथ ग्रेटर जेंडर इक्वालिटी अचीव हायर लेवल्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स फॉर ऑल देयर मेंबर्स।
हायर लेवल्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, सामाजिक अधिकार एवं अर्थनैतिक अधिकार बहुत माने उच्च अधिकार से माने प्राप्त करिथंती जो समाज रे स्त्री एवं पुरुष को समान अधिकार दिया जाई थाए, समान मर्यादा मिली थाए। टू पुट इट सिंपली जदि या ऊपर हम डिस्कस करवा है, टू पुट इट सिंपली जेंडर इक्वालिटी इंपैक्ट्स ह्यूमन डेवलपमेंट, मोटा मोटी भाव कहवा गले जेंडर इक्वालिटी इंपैक्ट्स ह्यूमन डेवलपमेंट, मनीषर प्रगति उपरे ए लिंगगत भेदभावर प्रभाव सीधा सीधा पड़ी थाए। जेंडर इक्वालिटी इंपैक्ट्स ह्यूमन डेवलपमेंट, मनीषर प्रगति जदि दरकार, मनीष जदि प्रगति चाहे ताहेले लिंगगत समानताटा समाज रे रहिबा एकांत आवश्यकता अछि। It is the first and foremost condition that should be fulfilled in the society if you want development society। जदि एक समाज माने विकासशील समाज तुम चाहूच, गोटे प्रगतिशील समाज चाहूच, ताहले निश्चित भावे स्त्री आउ पुरुष को समान अधिकार मिलवा दरकार है। ह्यूमन डेवलपमेंट, देयरफॉर महात्मा गांधी राइटली सेड, महात्मा गांधी कौन कहते पिले, राइटली सेड इफ यू एजुकेट ए मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, तुम जदि जड़े पुरुष को शिक्षित करुच, जड़े पिला को शिक्षित करुच, तुम जड़े व्यक्ति विशेष को शिक्षित करुच, बट इफ यू एजुकेट ए वुमेन, तुम जदि जड़े स्त्री को शिक्षित करुच, जोटे झील को पाठ पढ़ाऊच, देन यू एजुकेट एन एंटायर फैमिली, ता द्वारा गोटे परिवार शिक्षित हो जाऊँगी। तो गोटे पिला को जदि आम पाठ पढ़ुचे, पु पिला को पाठ पढ़ाऊचे, ताहले गोटे व्यक्ति विशेष को पाठ पढ़ाऊचे। आउ जदि आम इफ यू आर एजुकेटिंग अ पर्टिकुलर गर्ल, दैट मीन्स वी आर एजुकेटिंग एन एंटायर फैमिली, एंड वेयर एज इफ यू आर एजुकेटिंग अ बॉय, दैट मीन्स वी आर एजुकेटिंग और ग्रूमिंग एन इंडिविजुअल। दीज आर द वर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी। एटा कहार कथा, गांधी जी कथा बिले। So making women equal in all spheres would bring qualitative change in society. If we'll make women, if we'll make women competitive and qualitative in all sphere of her life, प्रत्येक जीवन प्रत्येक पर्याय प्रत्येक स्पर्धा आम जदि स्त्री को सम्मान दवा, स्त्री को पुरुष सहित समान अधिकार दवा, देन कौन हम पिले, इट विल ब्रिंग ए क्वालिटेटिव चेंज इन सोसाइटी, समाज गुणवत्तार परिवर्तन घटिबो। आम एक माने महत्वपूर्ण समाज, एक माने सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी जहाँ को कहवा, एभलिया गोटे समाज सृष्टि करि परिबा। कौन कले, इफ वी विल गिव इम्पोर्टेंस टू वुमेन इन कंपैरिजन टू मेन, जदि मनीष माने पुरुष मान को जी सम्मान दौचे, स्त्री मान को भी जदि समान सम्मान दवा, ताहेले आमे समाज भितर गोटे गुणवत्तार परिवर्तन आनी परिबा, समाज रे गुणात्मक परिवर्तन आनी परिबा। एंड या द्वारा कौन हबो, बाय दिस, so it improves, first thing remember, it improves what people's health, प्रथम जिनस स्वास्थ्यगत परिवर्तन, it improves people health, raises the nutritional standard, घर न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड बढ़िबो of the family, reduces child mortality बा शिशु मृत्यु हार कमीबो, reduces child mortality and ensure better educational outcomes, शैक्षिक परिवर्तन भी परिलक्षित हम, एजुकेशनल आउटकम भी परिलक्षित हम फॉर द नेक्स्ट जेनरेशन, परवर्ती पीढ़ी पाई, का पाई, परवर्ती पीढ़ी पाई। जेंडर इक्वालिटी इज इंटिमेटली रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, एंड दिस जेंडर इक्वालिटी बा लिंगगत समानता जहाँ को हमें कहूचे, इट व्हाट रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जदि स्थायी प्रगति तुम चाहूच समाज रे, जे आम जो प्रगति पाइब से क्षणस्थायी नुह, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं, सो वी वांट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड इफ यू वांट सस्टेनेबल डेवलपमेंट यू मस्ट गिव ए स्पेस टू द वुमेन इन सोसाइटी, समाज रे नारी को नारी रो जगह दवा पड़िबो, पुरुष भली सम्मान दवाई पड़ो, कौन करने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाइबा पाए, समाज रे सस्टेनेबल डेवलपमेंट आने इकोनॉमिक प्रोग्रेस। वुमेन कैन ऑल्सो प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। Another role women can play, if will what bring
gender equality into our society. That is what? Conservation of natural resources, प्राकृतिक संबलर संरक्षण. जदि तुम प्राकृतिक संबलर संरक्षण चाहूच ताहेले यह किए कहा द्वारा बेसी संभव? स्त्री मानक द्वारा. हैं स्त्री मानक द्वारा बेसी संभव किपरि पिले? एंड कम्बाटिंग क्लाइमेट चेंज आमर जो पाग पाणीपागर परिवर्तन होची, जलवायुर परिवर्तन होची, एई जलवायुर परिवर्तन और पाणीपागर परिवर्तन भी एमानक द्वारा आम करि पारिबा, नियंत्रण करि पारिबा. केमिति से जिनस आगु को आम पढ़िबा पिले. once they acquire knowledge and training, गोटे थर once if they will be able to acquire knowledge and training, से मानको जदि उपयुक्त तालीम दिया जाए, उपयुक्त ज्ञान दिया जाए, वितरण करा जाए से मानको you know, once they acquire knowledge and training, food, water and energy crisis can be dealt with more effectively. Food, water and energy crisis. Food कहले खाद्य, एनर्जी कहले शक्ति एंड जल. यही तीनटा जो खाद्य, जल एवं शक्ति संकट देखा दौची वर्तमान समाज रे, दिस थ्री कैन बी डील्ड मोर इफेक्टिवली. बहु माने भल आहुरी प्रभावशाली ढंग रे आमे नो डाउट वी आर डीलिंग, आमे डील करूचे, बट याकू आहुरी प्रभावशाली ढंग रे आमे नियंत्रण करि परिबा, कंट्रोल करि परिबा जदि स्त्री माननकु उपयुक्त स्थान समाज रे दिया जाए, स्त्री माननकु उपयुक्त तालीम एवं शिक्षा दिया जाए ठीक से more effectively. Women contribute equally to the economy. If you will talk about the economic condition of our society, आम समाज रे अर्थनैतिक व्यवस्था को जदि आमे देखिबा, if we will talk about what the economical condition of our society, women do contribute. सेमाने भी तांकर भी अवदान अछि, सेमाने भी फाइनेंशियली आम समाज को साहाय्य करते. पिले आमे जानिथिबा बहुत बड़ बड़ माने इंदिरा नोई को कथा जानिथिबा नहीं. इक्वली टू द इकोनॉमी, जेंडर इक्वालिटी कैन सक्सेसफुली रिड्यूस पॉवर्टी. आउ कौन करि परिबा पिले? जेंडर इक्वालिटी कैन सक्सेसफुली रिड्यूस पॉवर्टी. आमर जो दारिद्र्यता अछि, ए दारिद्र्यतार एक प्रमुख कारण होची जेंडर इनइक्वालिटी. मो घरे मो स्त्री ताको मु काम करिवार सुजोग दो नाही है, मु जदि ताको से भलिया सुजोग दियंते, माने मु आई एम गिविंग माय एग्जांपल दिया जाए ताले मु जहा रोजगार करू से भी रोजगार करमता, जहा फल रे हमर कोन होंता, हमर आर्थिक सच्छलता आउरी बढ़िया आनता. तो एठी भी जेंडर इक्वालिटी ता गोटे रोल प्ले करूछ बिले नहीं. So economy, gender equality can successfully reduce poverty. So in order to achieve social progress, मोटा मोटी भावे जदि देखिबा, in order to achieve social progress, सामाजिक उन्नति जदि आमे आनिबा पई चाहूचे, we should make sure that no one is left behind. We should make sure that no one is left behind. कोनोसी व्यक्ति विशेष, कोनोसी महिला पछरे रहिबा कथा नुह. ये थिला कोन पिले? जेंडर इक्वालिटी एज एन एसेंशियल प्रिकॉशन टू सोशल प्रोग्रेस. सामाजिक प्रगति पाई, सामाजिक प्रगति पाई काहे कि माने लिंगगत समानताटा दरकार थिला. वर्तमान जिबा प्रेजेंट सिनारियो, वर्तमान वन एक नंबर यूनिट रो सब यूनिट होची दुई. एथरे को अछि द प्रेजेंट सिनारियो, वर्तमान रो परिस्थिति. वर्तमान आमे को भलिया परिस्थिति रे अछि पिले 20 मिनिट्स क्लास अच्छी और 7 मिनिट्स पर क्लास सारी सबुदिन 20 to 30 मिनिट्स हाफ एन आवर 8:30 आम क्लास करवा एथिक्स एंड वैल्यूज. या पर सेकेंड से ऑल 6टा सेमेस्टर जाक अल्टरनेटिव करके साधा पिले. सो इवन नाउ वुमेन थ्रू आउट द वर्ल्ड आर स्टिल ट्रीटेड एज अनइक्वल टू मेन, बट जेंडर इक्वालिटी इज वाइटली इंपोर्टेंट फॉर सोसाइटी. कौन अच्छी इवन नाउ वर्तमान आम कहूचे जे आमे वर्तमान कौन द्वाविंश शताब्दी 2022 मसीह अच्छे. सो वुमेन थ्रू आउट द वर्ल्ड आर स्टिल ट्रीटेड एज अनइक्वल टू मेन. केवल भारत रे नुह, नॉट वी आर नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड पृथ्वीर कोण अनुकोण रे प्रत्येक देश रे वुमेन को, स्त्री को इक्वल रेस्पेक्ट मिलू नाही. दे आर नॉट गेटिंग इक्वल रेस्पेक्ट इन कंपैरिजन टू मेन.
पुरुष को जो भाया रेस्पेक्ट मिलूँ स्त्री मान को से भाया रेस्पेक्ट मिलू नहीं ओके टू मेन बट जेंडर इक्वालिटी इज वाइटली इंपोर्टेंट बट in our society you must understand and बुझिबा दरकार that it is a vital necessary to get social progress सामाजिक प्रगति पाइबा पई आर्थिक भावे प्रगतिशील होबा पई जेंडर इक्वालिटी टा निहाती दरकार is vitally important for society realizing this यही कथाटा को अनुभव करी किरी realizing this social reformers try to fight against many customary practices that undermines women's position in society so social reformers सामाजिक सुधारक समाज सुधारक जो माने अछंती जो माने समाज पई काम करंती so they are trying to fight against such practices that are undermined women's quality स्त्री मानकर माने एमिति किछि प्रथा हम समाज रे प्रचलित थिला जेमति पर्दा प्रथा सतीदाह प्रथा विधवा प्रथा ए विभिन्न प्रथा जो प्रथा द्वारा स्त्री माने सदैव अवहेलित अवस्था रोथुले नेग्लेक्टेड हेकि रोथुले सेही प्रथा मानकर विरुद्ध रे वर्तमान स्वर उत्तोलन आरंभ हे गलानी चाली किछि जगह रे सो एक्टिविस्ट डेवलपमेंट एक्टिविस्ट पोजीशन इन सोसाइटी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज माने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज से मानकर प्रगति केमती आगु को जीवो से माने प्रोग्रेस केमती करिवे ता लागि जेमती हम ओडिशा सरकार एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप जागु कुचे मातृमंडली मातृ संगठन सब तैयारी करके महिला मान को आगु को नबा पई प्रचेष्टा चलैचंती पैसा पत्र भी दिया होचे से मान को निजे केमती निजस्व माने व्यवसाय से माने प्रतिष्ठान चलेबे एभला चालीची सरकार बहुत सारा नियम करचंती तथापि सरकारी नियम गोटे बाटरे आम कस्टम और ट्रेडिशन गोटे बाटे एभला गोटे परंपरा वर्तमान भी चालीची समाज रे The international community and national policy planners are trying to ensure quality to women in various spheres of life. And not only in our country, international organizations are also taking steps to ensure women's gender equality. से मानकर माने से माननको से समान स्पेयर को आनिबा पाई से समान स्तर को आनिबा पाई पुरुष सहित समतुल करिबा पाई तांकर क्वालिटी बढ़ेबा पाई कोन चलची पिले एक्जेक्टली माने इंटरनेशनल अंतर्जातीय स्तर संस्था माने मध्य काम करूचंती progress has been made in this direction so far as education, access to health service and participation in the economy and polity are connected. So in some cases like शिक्षा क्षेत्र रे तापर आ कोन अछि बिले access to health स्वास्थ्य क्षेत्र रे and सर्विस पार्टिसिपेशन चाकरी क्षेत्र रे किछिटा प्रगति आमे पाइछे somehow women are developing gradually धीरे से माने भी डेवलप करूचंती उन्नति करूचंती मिड स्ट्रीम को मेन स्ट्रीम को आसुचंती पॉलिटिकल कंसेंट एंड पॉलिटी राजनीतिक क्षेत्र रे मध्य but this progress has not benefited all women किंतु एई जो प्रगतिटा समस्तंक पाखरे पहुंची पारी नहीं this progress has not benefited all the women प्रत्येक स्त्री पाखरे जिनसटा ये समस्तंक पई एथिक्स अछि समस्तंक पई एथिक्स एंड वैल्यूज अछि पिले आर्ट साइंस कॉमर्स सब पिलांकर सब यूनिवर्सिटी रे अछि women still a major portion of women population and girls face inequality in their homes तो एते सब हैला परे मध्य स्टिल कोन हिच पिले women population maximum population of women स्त्री मानकर बहुत सारा संख्या and जियो माने face inequality in their homes घरे एबे भी समान को समान अधिकार मिलु नाही काहा को मिलु नाही जियो मान को समान अधिकार मिलु नाही कम्युनिटीज को कोठी मिलु नाही होम्स घर कम्युनिटीज गोष्ठी भितरे वर्क प्लेस कार्य करूथबा जागा रे एंड इन द लार्जर सोसाइटी बड़ बड़ जागा बड़ हमर जो समाज सामाजिक विधि व्यवस्था अछि से जागा रे एबे भी स्त्री मान को पुरुष भलिया सम्मान मिलु नाही दे फेल टू एन्जॉय देयर ह्यूमन राइट्स दे एटी प्रश्न उठे दे मीन्स वुमेन फेल्स टू एन्जॉय देयर ह्यूमन राइट्स तांकर जो मानविक अधिकार अछि से मानविक अधिकार भी से माने पाई पारु नामते को माने झियो माने यू आर करेक्ट
दे आर नॉट गेटिंग देयर ह्यूमन राइट्स से मानकु जो टिकक अधिकार मिलवा कथा से टिकक अधिकार भी मिलू नाही रे पिले दे फेल टू एंजॉय देयर ह्यूमन राइट्स एंड आर डिनाइड प्रिविलेज एंड अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू मेन जो प्रिविलेज पुरुष मान को मिलूँ जो प्रिविलेज कहले सम्मान जो रेस्पेक्ट पुरुष मान को मिलूँ जो अधिकार पुरुष मान को मिलूँ से अधिकारटा झील मान को वर्तमान पर्यंत आम समाज में दि जाए नहीं दे डू नॉट लीड ए लाइफ ऑफ डिग्निटी एक मर्यादार जीवन से माने एबे भी बंची पारु नाहंती को माने झील माने सो वुमेन्स पोजीशन इन सोसाइटी कैन बी बेटर अंडरस्टूड थ्रू ए लाइफ साइकिल gender justice yes dipte so women's position in society can be better understood through a life cycle जदि आम जीवन चक्र गोटे तैयारी करबा पिले जदि आम एई भलिया गोटे जीवन चक्र तैयारी करबा माने स्त्री मानकर पोजीशन को आम भलसे बुझी परिबा केमती देख मु तैयारी करूची प्रथम है प्रीनाटल स्टेज एटा कोन प्रीनाटल स्टेज तापर आम जीवा एपटे आइले इन्फांसी देन आसुची तमरो चाइल्डहुड तापरे हेला तमरो एडोलसेंट्स then comes reproductive stage then comes your elderly stage so this is the cycle that the women's gone through एटा होची prenatal then infancy then childhood then adolescence then reproductive and last one is elderly stage so these are the 6 stages of life एवरी वुमेन गोज थ्रू प्रत्येक स्त्री यही 6टा स्टेज दे की जाए कौन कौन कहली आउ तार मन रखिबा प्रीनाटल इन्फेंसी चाइल्डहुड एडल्ट एंड रिप्रोडक्टिव एंड एल्डरली दीज आर द 6 स्टेजेस एवरी वुमेन गोज थ्रू प्रत्येक स्त्री यही 6टा स्टेज दे की जानती तो एठी कोन हुए प्ले लाइफ साइकिल अप्रोच सिंपली मींस दैट ए वुमेन्स लाइफ स्पैन कंप्राइजेस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस एंड वुमेन्स लाइफ स्पैन कंप्राइजेस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस विभिन्न स्टेज विभिन्न स्तर की जानती है बने and there are 6 definable stages through which every individual goes the prenatal stage infancy childhood adolescence reproductive stage and old age in each of these stages ए प्रत्येक स्तर रे जो स्तर गुडी को मु कहली इन ई स्तर रे केवल ए माने मु को निर्दिष्ट स्तर ये प्रत्येक स्तर इन्फांसी बेलु माने प्रीनाटल मार पेटेरे थिला बेलु प्रीनाटल स्टेज शैशव माने शिशु अवस्था जब कीरो गाउता है जब चाइल्ड पिला है छोट होता है तापर माने एडोलेसेंस किशोर अवस्था तापर आसिला रिप्रोडक्टिव स्टेज जब बाहा जाए जब बुढ़ी हो जाए ए प्रत्येक स्टेज रे वुमेन मान को मेन तुलन रे नेग्लेक्ट करले प्रत्येक स्टेज रे कोन कोन केमति नेग्लेक्ट करले हम पढिबा को with men but biological differences between men and women make women lead a different type of life in each of the stage जति भी पुरुष भी ये स्टेज दे के जाए तथापि जो बायोलॉजिकल माने जैव विविधता अच्छी जैविक डिफरेंस देहर जो डिफरेंस अच्छी यही डिफरेंस जो स्त्री मान को पुरुष मान अपेक्षा समान सम्मान मिले ना okay so in each of the stages it is noted that boys and girls men and women have different of lives and their experience become diverse तो ए प्रत्येक स्टेज रे पिला एवं माने पुओ एवं झियो स्त्री एवं पुरुष समस्त को समान अधिकार मिले नहीं कस्टमरी प्रैक्टिस या पछरे कोन ताले एठी प्रश्न उठे काहे मिले नहीं why they are not getting the same dignity as in compared to men कहीं कस्टमरी प्रैक्टिस प्रथा और परंपरा प्रथम जिनस देन एज ओल्ड बिलीव्स चिरंतन विश्वास आग काल जो विश्वास चलती एबे भी विश्वास अबला दुर्बला समाज आगे चलता एबे भी चलता है नारी को भोग्य वस्तु बोली कि लोक भावुले आग वर्तमान भी भावुंट कि लोक अच्छा नहीं सो एज ओल्ड बिलीव्स देन अनइक्वल पावर दुई जनकर शक्ति सामर्थ्य को नहीं भी प्रश्न उठे देन सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक फैमिली सोशल इंस्टीट्यूशन सामाजिक संस्था सामाजिक व्यवस्था जो भली फैमिली परिवार भितरे पुओ और झील को समान सम्मान मिले ना मैरेज बाहाघरे दुई जन को समान ट्रीटमेंट दिए जाए ना प्रॉपर्टी धनर कथा जो उठे बापर संपत्ति पुओर जी अधिकार झीर से अधिकार दि जाए ना डू नॉट ट्रीट मैन एंड वुमेन बॉयज एंड गर्ल्स इक्वली मैन एंड वुमेन को से भाया समान मिले नहीं बॉयज एंड गर्ल्स को भी से भाया समान अधिकार मिले नहीं डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स फॉर डिफरेंट बॉयज एंड गर्ल्स
प्रत्येक अलग अलग नियम झील गोटे अलग नियम पुओ गोटे अलग नियम झील राति सारा बुलिले असुविधा राति बुलिले बाहर को गले असुविधा पुओ राति सारा बुलिब गोटे बेले आसो कौन असुविधा नहीं नो बडी दे आर टू टेल किसी कहबे नहीं अरे पुओ पिला से बुलू आ झील पिला कौन पाप कर झील पिला कौन पाप कर सो ये भाया मेंटालिटी एबे भी अच्छे आम समाज अच्छी different set of rules different attitudes and behavior patterns on the basis of sex create gender inequality in society on the basis of sex लिंग को नहीं कारण से स्त्री से पुरुष शरीरगत पार्थक्य अच्छी से पुरुष है सिंह आ स्त्री है छेली माने पुरुष जाति स्त्री शिकार कर कौ संविधान रे लेखा अच्छी भाया एटा एबे भी समाज रे चली तुम मैंने जो पर्यंत माने जो एजुकेटेड मास वर्तमान रो जो जेनरेशन पीढ़ी अच्छी तुम मैंने जो पर्यंत पिले ये सचेतनता निजे सचेतन हवा संगे संगे अन्य को सचेतन करिबो नहीं चली थी भाया सो इफ यू वांट टू चेंज दिस प्रैक्टिसेस जदी 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 आमे माने ए जिंस को परिवर्तन करिबा पई चाहूचे इफ यू वांट टू चेंज दिस प्रैक्टिसेस यही प्रैक्टिस को जब आम परिवर्तन करने चाहिए ताले कौन करवा पिले लेट अस टेक अप दिस मॉड्यूल एंड फाइंड वेज टू गेट रिड ऑफ देम यही जो आम यूनिटा पढ़ा एथरे से जिनस ही लिखाई जे आम कौन कौन करी या को आम परिवर्तन करि परिबा वी आर गोइंग टू लुक इनटू हाउ मेनी ऑफ आवर जेंडर प्रैक्टिसेस आर अगेंस्ट ह्यूमन वैल्यूज एंड मोरालिटी एंड एथिक्स एंड व्हाट वी कैन डू टू इराडिकेट देम ए मॉड्यूल रे में पढ़िबा जे आमे कौन करबा दरकार ए जिंस को समान करबा पई इक्वली ट्रीट करबा पई जेंडर इक्वालिटी समाज रे आनिबा पई आमे कौन करबा दरकार से जिंस लिखा आइछि कौन करबा नहीं से जिंस भी अछि वर्तमान सो लेट अस होप दैट ए न्यू वेव ऑफ कॉन्शियसनेस विल शेप ए न्यू जनरेशन ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन दिस क्लासरूम्स तो ए क्लास माध्यम रे आमे जानिबा पिले जे पिला झील आ पुआ भितर जो डिफरेन्स अच्छी से डिफरेन्स को केमती आम टैकल करवा से डिफरेन्स टाको केमती स्टेबल करवा जो से डिफरेन्स टाको केमती इराडिकेट करवा से विषय पढ़ा तो पिले परवर्ती पर्याय आज तो समय जाइए आसंता कालीर क्लास ठीक 8:30 मुझे ट्राए करी क्लास करने ना 8:30 रू 8:40 भितर निश्चित भाव तुम क्लास करी सो समस्ते जॉइन करवा नोटिफिकेशन न गले भी जॉइन करवा ट्राए करवा जे पंडा सर निश्चित भाव क्लास करेंगे 8:30 रू 8:40 ओके सी यू देयर स्टे ट्यून्ड मास्टर इंग्लिश बाय सांग मान सहित शेयर कर देते।